DIY skincare. DIY, do it yourself. I bought books where you got tips and tricks for DIY, but plumbing, for household work DIY. Skincare is not a DIY science, I'm sorry. Skincare is not supposed to be an experiment. You can't experiment with your skin. Your skin is not this. ये skin नहीं है. Your skin is an endocrine organ that covers the entire body. People forget that. Or some of us don't even know that. What's another endocrine organ? Thyroid, for example. Next time you have a thyroid problem, try going on the Instagram or Amazon and searching for a solution for that. Then why for one endocrine organ you want to go all the way to the doctor specialist, and for the other endocrine organ you want to trust somebody who's doing this kind of an action, 20-year-old some on the Instagram reels. Make sense? Why would you not buy thyroid related medication basis the packaging? Fancy packaging, beautiful glass bottle, nice fragrance. Why don't you buy a medication for thyroid because of that? Because thyroid is not a big industry now. Skincare is. I'm not trying to scare things. I'm just trying to pick the carpet up to show you what kind of things that you've pushed under the carpet for a very long time. It only makes sense to be aware of this, of these marketing gimmicks and lies. You have brands, people put organic on the packaging. Let's try and understand what organic means. In India, if you have to take organic certification for a certain farmland, that's what the organic in real sense means. कि आप organic खेती करोगे, वहाँ से जो produce आएगा उसको जब आप process करोगे, so that produce will be termed as organic. कायदा यही है. Let's try and understand आपको organic certification for your farm, for your खेत लेने के लिए क्या करना पड़ेगा. You go to an organization that gives you organic certification, they'll give you a form, a checklist. You start going as per the checklist. You are a very diligent fellow. You start going as per the checklist. First year, at the end of the first year, you will be given a first year conversion certificate, second year conversion, third year conversion. ऐसे करके आपको 5 साल अगर आप वो checklist follow कर लेते हो, you get a organic certification. उसके बाद चाहे आप जो मर्जी उगाओ on a yearly basis, you will be audited. अगर आप उसके ऊपर, उस खेत के ऊपर जो भी उगाओगे, that stuff will be termed as organic. That will be certified organic. And you, I support कि जो भी ये कर रहा है वो बहुत diligently कर रहा है, पर उसका पड़ोसी नहीं कर रहा है. आपका अगर तो let's say 1 एकड़ का एक फार्म है, आप उसके ऊपर बाउंड्री करिए और उसके अंदर आप कुछ भी नहीं आने दे रहे हो, उसके अंदर आप बिल्कुल पेस्टिसाइड्स नहीं यूज कर रहे हो, आप उसके अंदर दवाइयाँ जो कायदे की बताई गई हैं आप वही यूज कर रहे हो, ऑर्गेनिक मेन्योर, ऑर्गेनिक दिस, ऑर्गेनिक दैट, सारा कुछ बहुत बढ़िया मान गए. बट इस बाउंड्री के जस्ट साथ में जो सटता हुआ खेत है, जो बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ खेत है, that farm is using everything. So that is seeping down into the groundwater and you using the same groundwater. Organic certification is ideally valid in all its spirit and sense in a state like Sikkim, I would say. जहां पे पूरी की पूरी स्टेट ही ऑर्गेनिक है. खेत छोड़ो, वो सारा ग्राउंड वाटर, नदी, झरना, पानी, एवरीथिंग इज ऑर्गेनिक. यू कांट डिनाई दैट. दैट इज ऑर्गेनिक. उत्तराखंड देखो आप, पूरा भरा पड़ा है ऑर्गेनिक खेती से. उनके पास ऑप्शन नहीं है. पेस्टिसाइड की 40 लीटर की बोतल अगर तो उन्होंने ऊपर पहाड़ पे चढ़ानी है, दैट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर देम. दे विल इनकर मोर कॉस्ट फॉर दैट रादर देन doing it the traditional way. And there are places in Uttarakhand I've been, जहां पे जब से अर्थ बनी है तब से कोई केमिकल यूज नहीं हुआ है. उसको, उस जमीन को किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत है नहीं ना. तो इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप ऑर्गेनिक बोलोगे? आई कॉल इट बियॉन्ड ऑर्गेनिक बिकॉज यू कैन नेवर सर्टिफाई नेचर. दैट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ ऑर्गेनिक. सो डोंट जस्ट फॉल फॉर दीज वर्ड्स. डू योर बिट. डू योर डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस करो आप इन चीज़ों को ढूंढने में. नॉट बिकॉज somebody said. And as I say, always be convinced before you buy something that you want to be putting in your body. आप कोई एक पर्टिकुलर चीज़ अपनी जुबान पे रखो, that will be absorbed by your body and that thing will enter your bloodstream within, let's say, 2 to 3 seconds.
यू कीप इट हेयर ऑन योर, यहाँ पे आप रब करो, वो 7 से लेके 10 सेकंड के बीच में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है, कहाँ गई? दैट विल बी एंटरिंग योर ब्लड स्ट्रीम। सो व्हाई द डिफरेंशिएशन? If you can't eat from here, why are you eating from here? Be convinced. Be convinced before you start putting things into your body through any channel. I would say do your research. नहीं, let's not use such a big word for a very simple activity. Do your search. Research होती है बहुत साल, बहुत ज़्यादा technical word है ये research. Let's not confuse it. But do your search at least. Don't get swayed away by some fancy packaging and some fancy claims. Ask questions. पहले आप जाके देखो कि भाई जो मेरे को ये खाना या मुझे स्किन केयर या मुझे कोई भी पर्टिकुलर दवाई बेच रहा है, ये कौन है, क्या इसका बैकग्राउंड है? Then start asking questions about that particular product. So the idea is very simple. Be convinced before you buy something. And if you are convinced enough, carry on with that. For some time at least. Don't keep hopping from one thing to another, to another, to another, to another. आप तो सारी उम्र अगर एक्सपेरिमेंट ही करते रहोगे तो फिर आप जो आपने कंडीशन करना है अपनी बॉडी को वो कैसे करोगे? Be convinced.